and I'm sure you're gonna recover it in first 2 trades maybe. The quality was very professionally crafted. It was very professionally crafted. It was evolved very naturally. No more. I mean, 90% of the other courses are having technicals, charting, and they just focus on this, right? लेकिन इस कोर्स की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि वो जो उसकी ओवरऑल अप्रोच थी अबाउट मनी माइंडसेट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, और उसके लिए एक चीज़ जो बहुत बेनिफिशियल थी वो ये थी कि इन्होंने कुछ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले से ही रख दिए थे, 4-5 लेक्चर्स थे, एंड दे वर वेरी गुड, रियली दे वर वेरी गुड. और उसके अंदर जो है फंडामेंटल्स कैसे रीड करते हैं, बेसिक चार्टिंग क्या होती है, ट्राइसेक्शन, मनी माइंडसेट, इकोनॉमिक्स की बेसिक ABCs, ये आपने पहले से ही लर्न कर ली थी इवन द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे. तो उससे ये हुआ कि बाकी तमाम लोग, मेजॉरिटी जो थी वो ऑलमोस्ट एक दे वर ऑन अ बेस कैंप ऑफ अ बूट कैंप, राइट. इस सेशन के दौरान हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग डेवलप किया, उसे इम्प्रोवाइज किया बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनैलिटीज़, because we all are different, right? We figured it out कि what is the best investment style for us individually, which was like really the best thing. हाँ, जहाँ तक इस कोर्स की प्राइस की ताल्लुक है कि the charges, I was surprised because it was so low. It was such a cheap course for more than 10 weeks, extensive course. It was very low, and I'm sure you're gonna recover it in first 2 trades maybe, right? So I would recommend it to everybody, no matter you are a beginner or an intermediate trader, day trader, long term investor, value investor. आप सब लोगों के लिए है. इनसाइट्स बहुत अच्छी दे रहे थे, स्टोरी बिल्डिंग यूजिंग एक्सटर्नल डेटा, द स्टोरी बिल्डिंग एक्चुअली बिहाइंड द प्राइस एक्शन, राइट, बहुत अच्छी थी. पाकिस्तानी इकोनॉमिक साइकिल्स को बहुत अच्छा फोकस किया हुआ था, उसको कैसे लेवरेज करना है, दैट वाज आल्सो आई मीन वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. So I would recommend it everybody, and definitely I'm looking for another one, inshallah. Thank you.